नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सारथी सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम मित्रों हार्दिक स्वागत है। तो आजना आ विडियोनी अंदर धोरण 11 अंग्रेजी विषयनी अंदर तमारे जे इम्पोर्टન્ટ मतलब के एसे आवे छे ए आईएमपी एसे मतलब के पेरेग्राफ राइटिंग आज आपणे जोवाना छीए अने ए पण जवाब साथे। तो आ विडियोने स्कीप कर्या वगर अंत सुधी जोता रहेजो। जो तमारे स्कूलनी अंदर अंग्रेजीनुं पेपर लेवानुं बाकी होय तो अहींया आपणे जेटला आईएमपी निबंधो जोवाना छीए एमांथी तमने परीक्षानी अंदर पूछाशे। तो सौथी पहेलो अगत्यनो कोई निबंध जो होय परीक्षानी अंदर पूछाई शके एवो तो ए प्रथम निबंध छे माय फेवरेट स्पोर्ट पर्सन मतलब के मारो प्रिय खेलाड़ी। तो अहींया मैं तमने एक जवाब पण आपेलो छे, हूँ फटाफट छे ए जवाब वांची आपું છું તમને। ધ नेम ऑफ माय फेवरेट स्पोर्ट पर्सन इज महेंद्र सिंह धोनी। ही बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ झारखंड। एट प्रेजेंट टाइम he is the captain of Indian cricket team। જ્યારે અત્યારે હાલમાં નથી પરંતુ તમે લખી શકો। also he is wicket keeper of Indian cricket team as well as the best batsman in the cricket world। Mahendra Singh Dhoni is a great player of Indian cricket team। by his own performance Indian cricket team has won many cricket trophy like cricket World Cup, Cricket T20 World Cup, etc. Due to his performance and success in world cricket, Mahendra Singh Dhoni has first position in ICC ranking as a cricket player। He is a great and generous player of Indian cricket team। Nowadays, he is the most popular batsman in the world cricket। One proverb is most popular for him that when he touches anything then that thing become gold। He never lose heart in any condition and due to his reason Mahendra Singh Dhoni is my favorite sport person। तो आ रीते तमारे माय फेवरेट स्पोर्ट पर्सन विषे पण परीक्षानी अंदर निबंध पूछाई शके। त्यार पछी हेल्थ इज वेल्थ, अहींया थोड़ीक टाइपिंग मिस्टेक छे, आईडी लखाई गयुं छे ते हकीकतमां इज आवशे, हेल्थ इज वेल्थ। तो जवाब आपेलो छे फिजिकल एंड मेंटली वेलनेस आर क्रुशियल फॉर द वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन। अनफॉर्च्युनेटली इन टुडे सोसाइटी चिल्ड्रन ऑफन नेग्लेक्ट दिस एस्पेक्ट ऑफ देयर हेल्थ ड्यू टू एक्सेसिव स्टडी एंड टेक्नोलॉजी यूजेस। Rather than playing outside, they opt for unhealthy snacks and spending hours in front of screen। राइट, आ रीतनो आखो जवाब तमने अहींया आपेलो छे तो ए पण तमने परीक्षाना दृष्टिकोणथी आखो पूछाई शके एम छे। त्यार पछी आपेલું છે these harmful behavior slowly deteriorate their overall health। therefore parents must priority their children's physical and mental health and establish healthy habits from a young age। Regularly maintaining cleanliness is also vital in preserving good health। राइट, आ रीतने आखो जवाब तमारे लखवानो छे अने अहींया पण थोड़ोक ज आपेलो छे चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स एक्सेसिव यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हेज। राइट, आखो एनो जवाब छे। त्यार पछी बीजो एक निबंध तमने परीक्षानी अंदर पूछाई शके एवो होय तो ए छे सेव ट्री अथवा तो ट्री अवर बेस्ट फ्रेंड। आ बे रीते पूछाई शके, सेव ट्री अथवा तो ट्री अवर बेस्ट फ्रेंड, आ रीते पण तमने निबंध पूछाई शके। तो मोटा भागे सेव ट्री उपरथी निबंध आवतो होय छे। फ्रॉम चाइल्डहुड वी हैव हर्ड दैट ट्री आर अवर बेस्ट फ्रेंड बट in practical life we didn't see anyone who treat trees as their best friend। राइट, आ रीतनो आखो जवाब तमारे लखवानो छे, जवाबनो स्क्रीनशॉट तमे पाड़ी लेजो। त्यार पछीनो एक निबंध परीक्षामां घणी वखत पूछातो होय छे बुक्स आर अवर बेस्ट फ्रेंड। पुस्तको आपणा सारा मित्रो छे, आ रीतनो आपेलो छे बुक्स आर द बेस्ट कंपेनियन ऑफ ह्यूमन बीइंग विच अनरीच अवर माइंड विथ नॉलेज। राइट, आ रीतनो आखो जवाब तमने अहींया आपेलो छे। एना पछी घणी वखत माय ग्रेन्ड पेरेंट्स मतलब के आपड़ा दादा विषे अथवा तो दादी विषे एक निबंध पूछातो होय छे। मतलब के आपड़ा जे
દાદા દાદી છે એના વિશે, ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સ વિશે. એના પછી માય ફેવરિટ ફેસ્ટિવલ વિશે એક નિબંધ તમને પરીક્ષાની દ્રષ્ટિકોણથી પૂછાતો હોય છે. તો એ અહીંયા આપેલું છે, માય ફેવરિટ ફેસ્ટિવલ ઇઝ દિવાળી, સેલિબ્રેટેડ વિથ ઇમેન્સ જોય એન્ડ એન્થુસિયાઝમ ઇન ઇન્ડિયા. રાઈટ, આ રીતનો આખો આપેલો છે. એના પછી ઇફેક્ટ ઓફ ગ્લોબલ વોર્મિંગ, ગ્લોબલ વોર્મિંગ વિશે, પોલ્યુશન વિશે એક નિબંધ તમને પૂછાઈ શકે કે ભાઈ ગ્લોબલ વોર્મિંગ ઇઝ અ રિયલ પ્રોબ્લેમ ધેટ મેની પીપલ વોન્ટ ટુ ડિસઅપ્રૂવ ટુ ગેઇન પોલિટિકલ એડવાન્ટેજ. રાઈટ, આ રીતનો આખો ગ્લોબલ વોર્મિંગ વિશે તમને પરીક્ષાના દૃષ્ટિકોણથી પૂછાઈ શકે એક સરસ મજાનો નિબંધ આપેલો છે. તો આટલા નિબંધ તમે કરીને જાશો એટલે મોટાભાગે આ નિબંધોમાંથી તમારી એક્ઝામના દૃષ્ટિકોણથી અંગ્રેજીની અંદર જે પેરેગ્રાફ રાઇટિંગ આવે છે એ કવર અહીંયા થઈ જશે. રાઈટ, આઈ હોપ કે તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરી દેજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાની બાકી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. મળીએ છીએ નવા વિડીયો સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત.